Hello dear friends, welcome to a new lecture of P block element group number 17. Okay, in our last lecture we have learned about dichlorine Cl2, making physical properties, chemical properties, at the same time uses of the dichlorine. Now it's time to learn about the hydrochloric acid, or you can say hydrogen chloride. If in a gas form we can say it is hydrogen chloride, but in an aqueous form it is known as a hydrochloric acid. So ultimately दोनों के नाम एक साथ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताए जाते हैं. वन ऑफ द प्रीसियस केमिकल फॉर द एनी केमिस्ट. ओके, किसी भी इंडस्ट्री के लिए भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. सो लेट्स स्टार्ट विद सम हिस्ट्रिकल पॉइंट्स. ओके, सो फर्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड बाय द ग्लोबर. ओके, ग्लोबर ने पहली बार 1648 में प्रिपेयर किया था विद द सेम पैटर्न. विच पैटर्न? दैट पैटर्न वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर H2SO4 में, नॉट प्रीवियस लेक्चर एक्चुअली, इन द H2SO4. In the H2SO4 we have learned one property, that H2SO4 with the salt of volatile acid. NaCl is nothing but the salt of HCl. With the salt of volatile acid, from the H2SO4 we can get that volatile acid back. So NaCl plus H2SO4 at 420 Kelvin temperature we can get sodium bisulfate and hydrochloric acid. So that is the common pattern. Okay, and Davy showed that it is a compound of H2 and Cl2. Davy ने बताया था, but इसके बाद की बात है. तो these are the historical points. Okay, now about the making or preparation of hydrochloric acid. Okay, first of all I want to tell you something, that we have some limitation over here, particular for some lectures. तो कुछ लेक्चर के लिए हम पर्टिकुलर वी आर गोइंग टू लर्न ओनली NCERT पोर्शंस. ओके, देर आर सम इम्पोर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स आर देयर, बट उसको हम बाद में कवर करेंगे. फॉर नाउ डेज कुछ दिन के लिए वी आर ओनली गोइंग थ्रू विद द NCERT पोर्शन. सो फर्स्ट इज द मेकिंग ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, और यू कैन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, लार्ज स्केल के लिए भी यही है और इंडस्ट्रियल के लिए, स्मॉल स्केल के भी यही है फॉर नाउ. ठीक है, NaCl with sulfuric acid at 420 Kelvin temperature we can get sodium bisulfate and HCl as we discuss ago. Okay, और अगर इसकी फर्दर रिएक्शन करते, रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट विथ NaCl अगेन at 23 Kelvin temperature we can get sodium सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, अगर इन दोनों को एक साथ पूरी रिएक्शन लिखना चाहते हैं, देन वी कैन से ट्वाइस ऑफ NaCl विथ H2SO4 विल गिव्स Na2SO4 प्लस HCl. क्लियर? ओके, अभी ये HCl जो भी HCl हमने बनाया है, मोस्ट ऑफ द केस उसमें वेपर रहेगी, H2O वेपर तो रहेगी. सो वो H2O वेपर को दूर करना, या फिर H2O पोर्शन आर देयर. If you want to make dry HCl, then we can use sulfuric acid. HCl gas can be dry by passing through the concentrated sulfuric acid. If we pass concentrated sulfuric acid, we can able to get dry hydrochloric acid. Clear? Okay, so now some important physical properties of the HCl. Some important physical properties of the HCl is that कलरलेस बट वेरी पंजेंट इन स्मेल. ओके, एकदम तीव्र से उसकी स्मेल आती है. अगर आप HCl की कोई बोतल खुली और आप उसकी स्मेल एकदम जल्दी से ले लेते हो, देन डायरेक्टली हेड ऑफिस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करेंगे. क्लियर? देन इजीली लिक्विफाइड to a colorless liquid we can able to liquefied HCl hydrogen chloride to HCl liquid with the boiling point 189 Kelvin. Clear? 189 Kelvin, and it freezes to a white crystalline solid. white crystalline solid में freeze हो सकता है with the freezing point 159 Kelvin. Particular this both value we have to remember as we have no any other option. So these are the making and this is the chemical physical properties. Now it's time to learn the chemical properties of the hydrochloric acid. Hydrochloric acid easily water soluble है और जल्दी से क्या करेगा, HCl plus H2 will gives H plus and Cl minus, or we can say H3O plus and Cl minus very quickly
with the dissociation constant 10⁻⁷. This is the huge amount. It shows that hydrogen chloride, or we can say HCl, is a strong acid. Okay, on the basis of this, the value Ka is equal to 10⁻⁷, we can say HCl is very strong acid, gives HCl plus H2O, H plus and Cl minus. But as we know, H plus is the smallest ion, so we can write H3O plus with the help of H2O. Okay, and as we discussed, aqueous solution of HCl, hydrogen chloride gas, is known as a hydrochloric acid, जो हमने पहले ही डिस्कस करा है. One of the most or one of the strongest acid among ever. HCl is able to react with ammonia quickly. If ammonia and HCl made somewhere, they react very quickly and format NH4Cl. Actually, this NH4Cl we will get in a solid form. Okay, fumes के फॉर्म में ये मिल सकता है. क्लियर. ओके, नाउ कहीं ऐसे एलिमेंट है, पर्टिकुलर मेटल्स है, इनर्ट मेटल, दे आर नॉट सॉल्यूबल इन एनी सॉल्वेंट, नॉट HCl, नॉट H2SO4, नॉट डाइल्यूट और नॉट कॉन्सेंट्रेट, बट वी वांट टू सॉल्यूट देम. उसको हमको क्या करना है, किसी उसका सॉल्यूशन बनाना ही है, उसको किसी के कोई ना कोई सॉल्वेंट के अंदर उसका सॉल्यूशन बनाना है. देन king of the chemicals, or we can say king of the acid, aqua regia. What is the aqua regia? 3 portion or 3 part of hydrogen chloride and 1 part of HNO3 nitric acid. Okay, as we ratio total 4 amount अगर देखते हैं तो 3:1 ratio of HCl and HNO3. That particular mixture is known as aqua regia and able to solute most of the elements and at the same time most of the compound. अगर कोई एलिमेंट है जो किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं है, then we can take help of aqua regia. क्लियर. ओके, अभी इसके लिए थोड़े एग्जांपल देखना है, तो बने रहिए दोस्तों. ओके, we were talking about aqua regia. Again I repeat, aqua regia is nothing but the mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid. The 3 part of hydrochloric acid and 1 part of nitric acid, ratio 3:1 is, this mixture is known as a aqua regia and also known as the king of chemical because it is solvent for almost each and every component or metals. Okay, it is able to solute rigid metals like Au and Pt. Okay, why I am calling rigid, इसको मैं rigid क्यों बता रहा हूँ, because they are inert, they are not able to react. Okay, ऐसे rigid metal को, inert metal को भी, noble metal को भी क्या कर सकता है, solute कर सकता है, उसका solution बना सकता है. We can see with the reaction of Au and with the reaction of Pt. Okay, यहाँ पे उसका redox reaction दे रखा है H plus and Cl minus, that formation is known as a hydrochloric acid. And again NO3 minus is also there, so NO3 minus is from nitric acid. Okay, Au plus 4H plus 4 NO3 minus plus 4Cl minus gives the salt AuCl4 minus 1 plus NO plus twice of H2O. So this is the soluble form, anion form of the Au, जहाँ पे Au gold soluble हो रहा है उसका anion form है. If we react with platinum, 3 platinum with 16H plus and 18Cl minus plus 4 NO3, इसको बैलेंस करना है. This is the redox reaction. Okay, then what we will get? We will get 3 PtCl6 minus 2. Again Pt is the part of the anion. Okay, anion का part रहेगा with 4 NO and 8 H2O. So we can say Pt and Au is also soluble in aqua regia. अब अभी कहाँ से कोई क्वेश्चन आए कि भाई HCl गोल्ड को या प्लेटिनम का सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो अभी हम कहेंगे यस वी कैन एबल टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड और प्लेटिनम, बट एट दैट टाइम वी हैव टू टेक aqua regia as a solvent, then and then the possibility of solution Au and Pt. Okay. Warning. This reaction produces toxic gases and uses corrosive acids. It should be performed in a fume hood with gloves. Greetings, fellow nerds. In this video, we're going to dissolve a gold coin in acid. Here is the coin. It's a 1/20th troy ounce Canadian maple.
Now we add 10 milliliters of concentrated 12 molar hydrochloric acid. By itself, the acid does not react with gold, so we add another 1 milliliter of concentrated 15 molar nitric acid. The mixture is gently heated to speed up the reaction. Eventually, the mixture will turn yellow and bubble as the gold starts dissolving. We showed in a previous video that gold will not dissolve in either hydrochloric acid or nitric acid alone. What's happening here is that the nitric acid is first oxidizing the surface of the gold. Then the chloride ions in the hydrochloric acid reacts with the gold ions to form a complex ion that dissolves away into solution. The nitric acid then further oxidizes the surface and the process repeats. Other oxidants also work, but nitric acid is the easiest to work with. The bubbles you're seeing are nitrogen dioxide gas along with some nitrosyl chloride, chlorine, and nitrogen monoxide. This mixture of hydrochloric and nitric acid is also known by the name of aqua regia. Aqua regia does not destroy all metals though. I showed in a previous video that ruthenium is totally immune to aqua regia. Looks like the reaction is slowing down. I'm going to add another 1 milliliter of nitric acid. Overall, what we're producing in this reaction is chloroauric acid. There is a famous story among chemists. During World War II, Hungarian chemist George de Hevesy dissolved the gold Nobel Prizes of German physicists Max von Laue and James Franck in aqua regia to prevent the Nazis from finding them. This deep orange solution was what they would have seen on the shelf. All the gold atoms are still there as ions and can easily be returned to metal with the proper reducing agent. Looks like the reaction is complete. We have destroyed a gold coin and converted it to chloroauric acid using aqua regia. Leaving it for a few weeks in a desiccator bag, we can dry it and produce the solidified form of chloroauric acid. Thanks for watching. One more chemical properties of the HCl. HCl can decompose the salt of weak acid. HCl की capacity, HCl decompose the salt of weak acid. Na2CO3, NHCO3 and Na2SO3. These are the salt of weak acid. CO3, HCO3 and SO3. तो इसका हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड decompose salt of weaker acid like carbonate, bicarbonate or hydrogen carbonate and sulfide ETC. If we react Na2CO3 with HCl, what will we get? We will get NaCl plus H2O plus CO2. अगर रिएक्शन बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 सोडियम आएंगे. ओके, उसके लिए यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा. If we react with NaHSO3 with HCl, Cl and Na recover as NaCl, H and O recover as H2O and CO2 is also there. If we react with Na2SO3, same reaction, यहाँ पे CO3 था, यहाँ पे SO3 था. सो यहाँ पे CO2 अगर मिलता है तो यहाँ पे मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड द प्रोडक्ट इज Na2. उसके साथ Cl रहेगा ट्वाइस ऑफ NaCl एंड H2O. सो these are the reaction or chemical properties of the hydrochloric acid or HCl. Okay, now it's time to turn about the use of HCl. ऐसा तो HCl बहुत वाइड रेंज में, इसके यूजेस बहुत मल्टीपल है इन डिफरेंट इंडस्ट्री. लाइक फार्मास्यूटिकल में होगा, इंडस्ट्रियल में, शुगर मिल में होगा, उसके अलावा आयरन फैक्ट्री है वहाँ पे भी हो सकता है. बट यहाँ पे कोई पर्टिकुलर यूजेस हमको दे रखे हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर. ओके, द यूजेस ऑफ HCl. HCl is used to manufacture various chemical, but particular chlorine, ammonium chloride, glucose from the corn starch. अगर आप corn starch या glucose बनाना चाहते हो then you have to take HCl as a reactant also. Okay, also used to extracting glue from the bones and purifying bone black. अगर आप bone black को purify करना चाहते हो and moreover आप bones में से glue निकालना चाहते हो then you have to take again help of HCl. Okay, one more. Also used in the medicine and as an important laboratory reagent in school level, also college level and also in industrial laboratory. वहाँ पे भी एक important
सॉल्वेंट इम्पोर्टेंट रिएक्टेंट कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट इज नथिंग बट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, there is one example 7.8 नंबर which is in टेक्स्ट बुक. वहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है Fe प्लस ट्वाइस HCl will gives FeCl2 प्लस H2. तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है अगर 2 की जगह 3 HCl होते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए FeCl3, बट FeCl2 मिलता है, FeCl3 नहीं मिल रहा. वाई? तो जब तक FeCl2 तक पहुँचे तभी वहाँ से H2 गैस लिबरेट होना स्टार्ट हो गया. अभी उसका काम क्या है, मेन प्रोडक्ट के साथ इंपॉर्टेंट गैस H2 लिबरेट हो रहा है. सो H2 एक बार लिबरेट होना शुरू हो गया तो अभी और कुछ नहीं चाहिए, H2 बनाते रहिए, उसके साथ जो प्रोडक्ट मिलती रहे उसको स्टॉप कर दो. सो बिकॉज ऑफ लिबरेटिंग ऑफ H2 एट दिस स्टेज ऑफ FeCl2, दैट्स वाई FeCl3 इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? ओके, these are the hydrochloric acid uses manufacturing physical and chemical properties. Now it's time to turn about the Oxo acid of halogens. Clear? So please keep concentrate. Okay friends, final topic for today's lecture, and that is the Oxo acids of halogen. Okay, again I repeat, there is some important additional topics over here, but for this lecture अभी हम इसको एडिशन में अभी ऐड नहीं करेंगे. For this lecture we are going with NCERT only. Clear? So फर्स्ट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन. ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन है तो कौन कौन सा हेलोजन के ऑक्सो एसिड पॉसिबल है, फर्स्ट दैट वी हैव टू रिमेंबर. तो हमने आगे पढ़ा है दैट फ्लोरीन इज एबल टू फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड, दैट इज नथिंग बट द फ्लोरिक एसिड, और वी कैन से हाइपोफ्लोरिक एसिड HOF. क्यों सर फ्लोरीन क्यों एक ही ऑक्सो एसिड प्रिपेयर कर सकता है? बिकॉज ऑफ देयर smaller size and higher electronegativity and lack of d orbitals. Okay, because of that several reasons fluorine is not able to form more than one oxo acid. So only HOF fluoric acid, or we can say hypoalous acid, is possible. At the same time other halogens are able to form several oxo acids. Okay, but most of them are not isolated. Okay, cannot be easily isolated in a pure state. हम उसको प्योर स्टेट में आइसोलेट नहीं कर सकते. किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऑक्सो एसिड ऑफ दी डिफरेंट हेलोजेंस. ओके, बट उसमें हम किसका समावेश नहीं कर सकते, किसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते? दैट इज हेलोजन. दैट इज फ्लोरीन. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्सो एसिड है, उसको हम प्योर फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर सकते. देन what is the stability about that oxo acid? They are stable in that aqueous solution form. Okay, ज़्यादातर केस में अपने aqueous solution form में they are stable रहेंगे. उसके साथ the stability in that particular salt also, उसके salt के अंदर भी वो stable रह सकते हैं. Suppose if we are talking about HOCl, if this HOCl की stability हमको चाहिए उतनी नहीं है, but HOCl में as we know H plus and OCl minus. So particular this OCl minus is able to form a salt with different metal. तो salt form में क्या रहेगा? They are more stable in their salt form. So their stability increase with the salt formation. Okay, here I have give some oxo acid, but ये ऑक्सो एसिड में एक चीज़ कॉमन है, दैट सभी X कॉमन है, सभी Cl है. यहाँ पे हम सपोज कर देते हियर X इज Cl. सो ऑक्सीडेशन ऑफ X इज +1, यहाँ पे क्या मिलेगी? +3, यहाँ पे +5, यहाँ पे +7. ओके, तो क्या होगा? जैसे जैसे हमारा हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, विद द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो एसिडिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज. सो यहाँ पे हमको याद रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए HXO5 इज हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ फुल एसिड, एंड HXO ऑक्सो एसिड में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी. सो विद द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक स्ट्रेंथ, आई रिपीट, एसिडिक strength will increase. Clear? That we have to remember. Okay, अभी यहाँ पे फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, पर्टिकुलर रो आपको याद रखनी. दिस इज फॉर फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन. उसके ऑक्सो एसिड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है, दैट वी हैव टू लर्न. ओके, सो फर्स्ट इज अबाउट फ्लोरीन. सर फ्लोरीन का तो एक ही एसिड पॉसिबल है,
दैट इज HOF, नॉन एज अ हाइपोएलस एसिड और हेलिक 1 एसिड. सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लोरिक 1 एसिड. रिपीट, फ्लोरिक 1 एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमिक एसिड एंड हाइपोआयोडिक एसिड. क्लियर. देन हेलिक 3 एसिड, यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन का फॉर्म ऑक्सीडेशन फॉर्म 3 होगा. सर HO और OHClO के बजाय अगर हम इस तरह से लिखें तो HClO2 चलेगा. इसको HClO2 इस तरह से भी लिखा जाता है, बट OHClO से उसका फॉर्मेशन याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा. यू कैन सी OH, दिस इज OH, देन Cl, दिस इज Cl एंड O ड्यूअल बनो. सो दिस इज नथिंग बट दी क्लोरस एसिड और वी कैन से Ls3 एसिड. क्लियर. क्लोरस एसिड और हेलिक 3 एसिड. ओके, सॉरी, हेलिक 3 एसिड और क्लोरस एसिड. ओके, देन ये पर्टिकुलर +3 वाला ओनली क्लोरीन के लिए ही पॉसिबल है. फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर नॉट एबल टू फॉर्म देयर फ्लोरस और ब्रोमस और आयोडस एसिड. ओनली क्लोरीन इज एबल टू फॉर्म क्लोरस एसिड. क्लियर. देन हेलिक 5 एसिड और हेलिक एसिड. सो दिस इज क्लोरिक, दिस इज ब्रोमिक एंड दिस इज आयोडिक. यहाँ पे नाम नहीं लिखा है तो आपको याद रखना है ब्रोमिक एसिड. व्हाट इज द फॉर्मूला? OHCl, repeat, OHClO2, sorry, OHBrO2 and OHIO2. सर इसको OHClO2 को हम HClO3 लिख सकते हैं. यस, HClO3 लिख सकते हैं, बट ये इजी रहेगा आपको उसका फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर याद रखने के लिए. यू कैन सी Cl, उसके साथ 2 ऑक्सीजन है, ड्यूअल बॉन्ड ऑक्सीजन, ड्यूअल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड 1 इज OH. सो 1 OH इज देयर. Clear. Similar with OHBr2 and OHI2. You can draw the structure similar, particular this given structure. Okay. Then helic 7 acid, or we can say per helic acid, OHClO3, or we can say HClO5 per helic or per chloric acid, per chloric, per bromic and per iodic. Particular this OH, OH and OH. This is the OH. Then थाइस ऑक्सीजन विथ क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन. सॉरी, यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने थोड़ी गलती की है, यहाँ पे रहेगा O3. क्लियर. OHBrO3. वी कैन सी ClO, ClO, ClO and OH. That is nothing but the structure of perhelic acid or helic 7 acid. So these are the oxo acid of halogen. यहाँ पे important question बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है एज वेल एज कॉम्पिटिटिव में भी आ सकते हैं. सो प्लीज़ दोस्तों ठीक से इसको पढ़ना है आपको.